Hello students, welcome back to the Smart Box. We will be watching our 10th chapter today, that is Force and Types of Force of 6th Standard. Okay, this is the part 1 of this video and we will be completing this chapter in this video itself. Okay, first of all, you all can see that on your first page of your textbook there is given some pictures over there. Let's understand the pictures first. Okay, in the first picture you all can see that there's a person who is moving a boat, try to move a boat. Okay, he has a stick in his hand. ओके वो उसको क्या कर रहा है, वो पानी में डाल के उसको पीछे की तरफ धक्का दे रहा है, तो बोट जो है वो आगे की तरफ जा रही है. ठीक है, means that he is applying some force on water so that he can move. Okay, next is sponge. Okay, sponge is when the sponge is kept, it is in its original position, but when you push it with your finger, it just changes its shape. Okay, next is this, a person is trying to bend a rod, okay, by applying some force. Okay, next is the bulls are applying force so that they can move the cart and the things kept on it. Okay, now you all must have done this in your life, that you have moved a tire with the help of a stick. Okay, we beat the tire with the stick again and again, and the tire moves in the forward direction. Okay, next is a boy kicking a ball. Okay, a boy kicking a ball so that he can score a goal or he can pass the ball to the other person. Every one thing in all these picture which is common is applying force. Okay, some of the other thing is applied force for doing some work. Okay, so for doing any work we need to apply forces. Okay, so we will be studying first of all what is a force, which you have to write in your notebook. No object changes its position on its own. Okay, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है खुद का पोजीशन चेंज नहीं कर सकता. कब तक? फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए. फोर्स इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोशन और टू स्टॉप इट. ओके, यानी हमें क्या बताया जा रहा है कि फोर्स जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन मूव करने के लिए, या ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए, या ऑब्जेक्ट मोशन में है और उसे रोकने के लिए हमें क्या अप्लाई करना होता है, फोर्स अप्लाई करना होता है. तो दिस इज़ द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ फोर्स विच यू विल बी राइटिंग इन योर बुक. ओके, नेक्स्ट इज force is necessary to change the shape of any object. This is also very important statement. If you have to change any shape of the object, you just can't sit simply and stare at it and it will change its shape, but you have to do something. You have to apply force so that it can change its shape. Okay, next we will be studying the types of forces, which is first one is muscular force. Muscular force is connected to muscles of your body. Okay, what is written over here? In all the actions shown in picture 10.1, the movement takes place with the help of the bones and muscles in the body. The person in the picture alongside is lifting the weight by using muscular forces. अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ऐसा फोर्स जिसमें हमारे बोन्स और मसल्स यूज़ हो रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं. द फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ मसल्स इज कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स. You have to write this and the definition only. Okay, and if you all want, you all can just draw this picture also. If you all want, it is not compulsory, but you have to write muscular force and its definition. Next is mechanical force. Mechanical force is connected to machines. Okay, every force which is done by with the help of machine is known as mechanical force. Okay, here it is written as, we use different machines for doing many tasks. Muscular forces is used to running some machines. Some machines are run by using electricity or fuel. Machines like later are called as automatic machines because the mechanical force is used here. For example, sewing machine and electric pump, washing machine, mixer etc. makes the list for other such machines. ये क्या हमको बोला गया है कि कुछ मशीन्स यूज़ करने के लिए हमें मस्कुलर फोर्स भी लगते हैं
और कुछ मशीन्स को हम लोग ऑटोमेटिक मशीन भी कहते हैं जो खुद से चलती है, ठीक है। तो ऐसी फोर्सेस जो हमको किससे अप्लाई करनी होती है, मशीन्स के हेल्प से हम अप्लाई करते हैं, दैट इज़ नोन एज मैकेनिकल फोर्स। The definition is the force applied by the means of machine is called as mechanical force. Any force which is applied with the help of using machines is known as mechanical force. Okay, this is your second type of force. Next is gravitational force. Okay, this is the most important force which you all be carrying forward in your 8th, 9th and 10th standard also. What is gravitational force actually? If an object is thrown upward applying force, it reaches a certain height and comes down again. Why is it so? Okay, we have seen that अगर आप कुछ भी हवा में फेंके, if you have a pen, if you have a pencil in your hand right now, if you throw it up in the air, okay, it will fall again on in your hand itself. Okay, it won't go up and up and up. Okay, it will go to a certain height and come back to your hand again. This is because of a gravitational force, a force which is inside the earth, which is attracting everything towards it, is known as gravitational force. Okay, the definition is the force applied by the earth to pull ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसा फोर्स जो अर्थ में है और अर्थ में जो फोर्स है वो सबको अर्थ के अंदर की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, next is magnetic force. Okay, magnetic force is very simple. Any force which is applied using magnet is known as magnetic force. The force exerted by a magnet is called as magnetic force. This you have to write. Okay, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स। आफ्टर ग्रेविटेशनल फोर्स दिस इज द second important thing which is known as frictional force. Now what do you mean by frictional actually? Let's see what is written over here. When a carom piece is flicked lightly, it slides over carom board but stops at a certain distance. Okay, हमारे पास घर पे कैरम होंगे, हमने कभी ना कभी कैरम खेला होगा, कभी ना कभी कैरम देखा होगा। तो इफ़ वी हैव सीन दैट वी हैव अ स्ट्राइकर इन इट। ओके, वो स्ट्राइकर को जब हम ऐसे मारते हैं with the help of our finger, it goes to a certain distance, okay, and then it stop moving. Okay, तो ऐसा क्यों होता है? The ball rolling over a flat ground stops in a certain distance. Why does it happen? Okay, if I am rolling a ball, अगर मेरे पास एक बॉल है और मैं उसको ऐसे रोल कर रहा हूँ तो वो भी कुछ दूर तक जाता है और फिर क्या होता है, रुक जाता है। ठीक है, so what it is written here, when two surfaces rub against each other, the force friction comes into play. It always acts against the direction of the motion. This is the definition of your frictional force. क्या बोलना चाह रहा है ये, कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से रब होते हैं, जब दो सरफेस एक दूसरे से रब होते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो क्या होता है, अप्लाई होता है। ठीक है, इफ़ यू ऑल कैन सी, इफ़ यू ऑल कैन रब योर हैंड लाइक दिस। ओके, अगर आप अपने हाथ को ऐसे रब करोगे ना तो हल्की हल्की से आपको एक आवाज़ भी आएगी, और जब आवाज़ आएगी ना तो आपको फील होगा कि भाई ऐसा कुछ तो है जो एक दूसरे से रब हो रहा है, और रब हो रहा है और आपके हाथ भी गर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो दैट फोर्स इज़ नथिंग बट फ्रिक्शनल फोर्स। अब जैसे अगर मैं चल रहा हूँ, सपोज इफ़ आई एम गिविंग एन एग्जांपल, इफ़ आई एम वॉकिंग एंड देयर इज़ अ बनाना पील ऑन द फ्लोर। ओके, बनाना पील है फ्लोर पर और मैं उसके ऊपर पैर रखूँ तो मैं क्या होऊंगा, फिसल जाऊंगा। वाई? बिकॉज दैट बनाना पील इज़ नॉट रफ। ओके, वो रफ नहीं है, दैट इज़ वेरी वेरी स्मूथ। वो स्मूथ होने की वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन काम नहीं कर रहा है। हमारे हाथ जो है वो रफ़ नहीं है, हमारे हाथ जो है वो स्मूथ नहीं है, वो रफ़ है। इसके लिए हम जब ऐसे उसे रब कर रहे हैं तो हमें फील हो रहा है कि देयर इज़ अ फ्रिक्शन। और हमारे हाथ रफ़ क्यों है? ताकि हम कोई भी चीज़ को ग्रैब कर सके तो उसमें क्या हो सके, हमें ग्रिप मिल सके। ऐसा ना हो कि हमारा हाथ इतने स्मूथ है कि हमने एक बॉटल उठाए, पकड़े, ऐसा उठाने गए और बॉटल नीचे रह गया, हमारा हाथ ऊपर चला गया। ओके, दैट्स वाई आवर हैंड्स आर वेरी रफ, सो दैट वी कैन पिक अप थिंग्स एंड आवर फ्रिक्शन शुड बी अप्लाइड ओवर दैट। ठीक है, तो ये था हमारा फ्रिक्शन फोर्स। क्या होता है, वापस से एक बार, जब दो सरफेस जो होते हैं एक दूसरे से रब होते हैं तो क्या होता है, जब रब होता है तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, दैट इज़ नथिंग बट योर फ्रिक्शनल फोर्स। ओके,
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है कि इफ़ यू आर हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ ऑयल इन योर हेयर राइट नाउ, ओके, सो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है कोम्ब ले सकते हैं एंड कोम्ब को आप क्या कर सकते हैं, अपने सर पे जो है ऐसे रब कर सकते हैं. बहुत तेज़ से अगर आप अपने कोम्ब को अपने सर पे ऐसे ऐसे रब करोगे और फिर उसको बिट्स ऑफ पेपर की तरफ लेकर के जाओगे, तो बिट्स ऑफ पेपर जो है ना उस कोम्ब पे फटाक से ऐसे चिपक जाएंगे, ठीक है. लेकिन अगर आप नॉर्मल कोम्ब को लेके जाओगे तो ऐसा नहीं होता है. तो व्हाई डज इट हैपन्स? सो दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ओके, spread small pieces of paper in table, rub a piece of thermal or an inflated balloon against a silk cloth and bring it near the pieces. This you all can do with the help of balloon also. लेकिन बलून हर किसी के घर पे नहीं होगा, बट कोम तो हर किसी के घर पे होता है. तो you all can do this experiment. क्या करना है आपको, एक बिट्स ऑफ पेपर लेना है, छोटे छोटे पेपर पीसेस के, और उसे जो है ना टेबल पर फैला देना है. And then what you all have to do, you all have to rub that comb on your head. okay, आपके हेयर पर आपको उसे क्या करना है, रब करना है. and then when you bring closer to the bits of paper, you all can see that the bits of paper will be getting attracted towards the comb. okay, rub a plastic comb against a dry hair and repeat above activity. Rub a peacock feather between two pages of a notebook and bring it near your fingers. ओके, तो दीज ऑल थिंग्स, ये सब जब हम करेंगे तो यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो, सॉरी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये बिट्स ऑफ पेपर जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं. यहाँ पे डेफिनेशन क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस ऑन मटेरियल लाइक रबर, प्लास्टिक एंड इबोनाइट ड्यू टू फ्रिक्शन. The force exerted by such electrical charge material is called as electrostatic force. ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डेफिनेशन है विच यू हैव टू राइट इट ऑन इन योर बुक. और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एग्जाम्पल है और एक्सपेरिमेंट्स है जो हम अगर करेंगे तो हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा. ओके, सो दिस इज़ वे वी विल बी कंक्लूडिंग आवर चैप्टर. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग द स्मार्ट बॉक्स.